ऐसा होता है, हम एक ऐसी दुनिया के अंदर हैं जहाँ पे हम फ़ोन से ग्रसित हैं। मैं ये बातें करूँगा कि फ़ोन बहुत हार्मफुल है, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं भी उसको कभी ना कभी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं भी नॉन स्टॉप अपना सारा का सारा प्रचार फ़ोन्स के थ्रू ही करता हूँ, राइट? सो आई एम गिल्टी एज आई स्टैंड। बट देर आर सो मेनी फोर्सेज आउट देयर। सब लोग आपको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं। मेरा मेरा इत्र खरीदो, मेरी बात सुनो, मैं ये रिझाने वाली बात कह रहा हूँ। उस सब में आई थिंक anyone in the armed forces, right, irrespective of rank, develops a callus in the mind, right? They become strong, immune to outside information. So how does a man become mentally strong then? सबसे पहले तो people need to understand what is mind. Is your mind something that is being tuned by a external device? Do you run because somebody has inserted something? Is your mind something that gets power from an external battery or a plug socket? Or is your mind something that is encased in your cranium and it is inside? So the answer is it is inside. Everything is inside. So if you fall prey to mobile, to bahari gyan, to influencers, most of them are not credible. So the problem lies inside. The problem lies inside. When I say problem lies inside, it is not knowing oneself enough leads to these issues. I have always been harping upon the fact in my live sessions whenever I sit that you need to first know yourself. You need to spend time with yourself. You need to talk to yourself. आप मोबाइल छोड़ दीजिए, आप हेडफोन छोड़ दीजिए, go out on a walk. Just see the world, what is happening left and right. Talk to yourself. Talk to yourself, your own soul. Who are you? What are you wanting? Why are you doing this? Are you on the right track? Are you following the regime that you had chalked out a week back, a month back? What is it that you crave? Success, money, women, fame, or your own satisfaction? People are not talking enough to themselves. Yes, I agree to the fact कि जब हम बड़े हो रहे थे, you and me, the distractions were less. You only had a television जिसमें DD2 आता था या DD1 नहीं होता था, वो भी monitored by the parents. And then when I went to Sainik school, maybe हफ्ते में एक दिन TV चलाते थे, शायद Sunday. So all that you could do is talk to yourself. When you talk to yourself, you cannot lie to yourself. Yeah. मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता कि I can climb Mount Everest. I can do the summit tomorrow. But it's only when you talk to yourself enough. Yes. So it has to start first. And then you'll slowly realize, because when I go out for my workouts or for my run or for my jog, I have nothing in my ear. I have that time for myself. Just reality itself. Yes. It is talking to me for myself. It is talking to myself. So if you talk to yourself, you will obviously know. Anybody in this world will know that this mobile, हाँ ठीक है, अच्छा है, रील्स है, शॉर्ट्स है, जो भी है, बट दिन में 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा यार. ये इन्फ्लुएंसर ऐसा दिख रहा है, ये सच में ऐसा है क्या? इसके 6 पैक्स भी हैं और ये इतना बड़ा मसल भी है यार. कुछ तो अमिस है, कुछ तो मिसफिट है. यू सी द बेस्ट ऑफ द फाइटर्स इन द UFC एंड द ट्रायथलन जो करते हैं, आयरन मैन, यू सी देयर मस्कुलेचर, देयर डेडिकेशन, देयर कमिटमेंट. And you see people who are in the gym. Nothing against them. Yeah. But I'm saying most of them are on steroids. UFC के अंदर I don't think there's very few fighters who are aesthetically pleasing to look at. Yes. And the amount of workout they do, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे रिकवरी हो, it is out of the world. You understand? So problem ये है कि there is too much data in this spectrum. Thanks to the internet and cheap Chinese mobiles. And parents very conveniently hand over the media, access to media to their children too quick. कि मेरा बेटा 4th class में 8th class का इंटेलेक्ट ले आएगा, which does not happen. By the way, मैं अभी भी जाके अपने फ्रेंड्स के वो मैथ्स और साइंस की बुक्स देखता हूँ, हिस्ट्री के. Nothing has changed, same है. Linear equation in 2 variables, similar triangles, geometry, वही है. मतलब nothing is, 12th का मैथ्स नहीं आया 10th में. So how are you helping your kid or your friends or your well-wishers by handing them media? The access to media. Some bit, yes, but absolute, how? Why? Yeah, even YouTube for kids, for all its merits, is still, उसमें मैं देखता हूँ, it's not even cartoon content, क्योंकि cartoon content का एटलीस्ट एक मेरिट था. Yes. कि 4-5 राइटर्स ने बैठ के एक शो लिखा, चाहे कितना भी ऊटपटांग है, it has a plot. Now YouTube for kids के अंदर यूट्यूबर्स ही आते हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली यूट्यूबर्स हैं.
लाइक वो अब अपनी दिनचर्या की बातें बता रहे हैं और हंस कर बात कर रहे हैं, बट देर इज नो स्टोरी, इट्स जस्ट अ पर्सन टॉकिंग. सो योर चाइल्ड मीडिया कंजम्पशन इज अ पर्सन टॉकिंग, एंड आइडली इट शुड बी बुक्स or stories or even fun stuff. So a personal example. I think when I was 5-6 years old, I broadly knew the story of Ramayana, broadly knew the story of Mahabharat, because उस time it was me and my father. And whenever I would walk out with him, holding his hands to go and drink a fruity. मेरे लिए fruity incentive होता था कि if I get full marks in whichever exam, my father would take me out to have a fruity उस time. बड़ी बात थी. Jump in या fruity जो भी होता था. Fruity. So that is what he would narrate ना. अभी when I ask my daughter कि बेटा आज जन्माष्टमी है, बताओ क्या हुआ था, all that she knows is कि कृष्ण जी पैदा हुए थे. She studies in a school जिसका 1 साल का फीस इज मेरे पूरे नहीं 2 साल का फीस आई थिंक मेरे पूरे 6 से लेकर सैनिक स्कूल के एंड तक का फीस होगा. आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बट जब आप इतनी बड़ी स्कूल बनाते हैं, बिल्डिंग रखते हैं, एसी लगाते हैं, फलाना ढिमकाना 4-10 चीज़ें बताते हैं, बट वी मिस द बेसिक अंडरलाइंग वो कॉज मेरे बच्चे को आज मेरे एज पे हमारे कल्चर का, संस्कृति का वो नहीं पता. उन्होंने जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट किया, बट शी डज नॉट नो कृष्ण वॉज born in a jail to parents who were handcuffed because there was a prophecy कि कंस will be killed. And he was the 8th child. तो मैंने आज दिखाया अपनी बेटी को, उसको मेरे को 2-4 बार और दिखाऊंगा for her to understand, grasp the story first, and then she'll understand the concept of कि क्या कैसे हो रहा था. So with time, yes, you've infused many things for the jing bang वो उसके लिए, but otherwise what has changed?